ओके, सो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गोल्ड के बारे में। प्रेस 1 अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है, ताकि हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस कर सकें आज के सेशन में। ओके, सो हम लोग देख रहे हैं गोल्ड का मूव आज कल की लगातार गिरावट के बाद आज लगातार तेजी के साथ देखने को मिल रहा है 1759 1760 के लेवल्स पे। वनडे कैंडल की बात करें तो आज की ओपनिंग 1753.81, अभी तक का हाई 1760.55, लो जो बनाते हुए दिखा है 1753.68 एंड करेंटली मूविंग एट 1760.28। तो देख सकते हैं जिस तरीके से मार्केट ने 1750 के आसपास एक सपोर्ट जोन बनाया है जिसको ब्रेक नहीं किया। अगर सपोर्ट जोन को ब्रेक करता तो 1726 तक के टारगेट रेडार पे थे, लेकिन मार्केट ने यहाँ से एक और रिकवरी दिखाई है। 1760 तक के लेवल्स हम लोग मार्केट में देख रहे हैं। अगर इसको ब्रेक करती तो हम लोग 1680 1676 तक के टारगेट मार्केट से एक बार वापस से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ताकि हम लोग की एक बार वापस से वही पोजीशन आते हुए दिखे जिसमें कि बाइंग प्रेशर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बट एज मार्केट ने वापस से रिकवरी दिखाई है 1744 1750 के लेवल्स बनाने के बाद वहां से सस्टेन होती हुई अब 1760s के लेवल पे है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज शाम में भी हम लोग को डेटा देखने को मिलने वाले हैं। बेसिकली शाम में 7:30 बजे की डेटाज है, उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव किस डायरेक्शन में होता है। सो मूविंग टुवर्ड्स 15 मिनट कैंडल, तो 15 मिनट कैंडल्स देख सकते हैं लगातार तेजी के साथ ही मूव करते हुए 1760 के लेवल पे आते हुए दिख रहे हैं। लगातार तेजी, बिल्कुल भी करेक्शन देखने को नहीं मिल रही है। आज लगातार तेजी का माहौल है। 1760 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो 1775 तक के टारगेट्स, लेकिन अगर अभी नहीं देखने को मिलता तो 1760 से वापस से करेक्शन आती हुई दिख सकती है। सेवनटीन 60.56 के लेवल्स पे मार्केट पूरी तरह से स्टेबल होती हुई, अगर इस लेवल को ब्रेक करने में पूरी तरीके से एबल होती है तो हम लोग देख सकते हैं 1770 तक के लेवल्स। देख सकते हैं 1760 के लेवल से वापस से थोड़ी सी करेक्शन आती हुई, अगर करेक्ट करता है तो 1757 1755। देख सकते हैं 1760.11 के लेवल्स पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि अगर ये कैंडल हम लोग को डाउन आती हुई दिखती है 1760 के लेवल को ब्रेक करती है और 1759 तक के टारगेट्स देती है, तो हम लोग एक बार करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज 1760 के लेवल को ब्रेक करती है तो 1770 तक के टारगेट्स मार्केट की रेडार पे देखने को मिलेंगे।
देख सकते हैं लगातार प्राइसेस स्टेबल होते हुए 1760s के लेवल पे। एक बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हमारा 1760s का लेवल है, और इस पे कोई भी पोजीशन कैरी करना थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक शॉर्ट डोजी कैंडल लगातार दूसरी एक शॉर्ट ग्रीन डोजी कैंडल देखने को मिली है, और ये एक वीक सिग्नल हो सकता है मार्केट के लिए। तो हम लोग वापस से मूव करते हैं अपने न्यूज़ सेक्शन की ओर, और हम लोग मूव कर रहे हैं अपने गोल्ड नेटेनिया.com पे। सो गोल्ड नेटेनिया.com पे करंट प्राइस है 1760.4164 के लेवल्स पे। अपनी ओपनिंग से 6.54 पॉइंट्स की तेजी के साथ, दैट इज 0.37% की तेजी के साथ। आज की रेंज की बात करें 1753.85 पे अपना लो बनाते हुए 1760.93 का हाई बनाते हुए दिखी है। ओपनिंग 1753.86, प्रीवियस क्लोजिंग 1753.86। ईयर वाइज चेंजेस की बात करें तो 134.23 पॉइंट्स की गिरावट के साथ ईयर वाइज परसेंटेज चेंजेस 7.09% की गिरावट के साथ। 52 वीक्स हाई 1965.47, 52 वीक्स लो 1676.73। जो वॉल्यूम ट्रेड करते हुए दिख रहा है 10,52,000 के आसपास। और 1 आवर की कैंडल की बात करें तो लगातार रिकवरी बनाते हुए 1750s के लेवल्स पे। 15 मिनट कैंडल का मूव देखें तो दो शॉर्ट ग्रीन डोजी कैंडल्स बनती हुई दिख रही है, जो कि उम्मीद दिखा रही है कि यहाँ से वापस से करेक्शन का माहौल बन सकता है अगर ये लेवल ब्रेक होते हुए नहीं दिखता है तो। आ जाते हैं अपने ग्लोबल मार्केट का मूव देखने। तो देख सकते हैं मार्केट ऑलरेडी मोस्टली हम लोग को पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। US30 आज पॉजिटिव, बिटकॉइन पॉजिटिव, शंघाई एसी नेगेटिव, UK 100 पॉजिटिव, DAX 30 पॉजिटिव, Nikkei 225 पॉजिटिव, Nifty 50 पॉजिटिव with 17,777.85, ASX 200 नेगेटिव, FRA 40 पॉजिटिव, IC नेशनल 100 नेगेटिव, Swiss MI 20 पॉजिटिव, UK ऑयल नेगेटिव, WTI क्रूड नेगेटिव, US डॉलर इंडेक्स नेगेटिव आज 92.83 पे, और जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा सा अप होते हुए 1760.4775 के लेवल्स पे। सिल्वर पॉजिटिव होते हुए, प्लेटिनम पॉजिटिव, एंड पैलेडियम हमारा डाउन होते हुए। MT4 टर्मिनल देख सकते हैं प्राइसेस वापस से करेक्शन दिखाते हुए 1760.29 के लेवल्स पे। देख सकते हैं 60s के लेवल को तोड़ते हुए मार्केट एक बार डाउन आती हुई 1760.0709 के लेवल्स पे। हमारी पूरी उम्मीद है कि एक बार करेक्शन देखने को मिल सकता है इस लेवल पे, क्योंकि 1760 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट के लिए इस टाइम पे।
वापस से थोड़े से अपसाइड रिबाउंड करते हुए 1760.46। यहाँ पे जब भी हम कोई पोजीशन कैरी करेंगे तो थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि हो सकता है कि 1760s के लेवल को ब्रेक कर जाए। तो 1770 1775 हमारे टारगेट, और अदरवाइज डाउन साइड 1755। तो हम लोग कोई भी पोजीशन कैरी करेंगे, बट आज थोड़ा सा ध्यान से। लगातार मार्केट पूरी तरीके से स्टेबल होती है 1760s के लेवल्स पे ही। एक मिनट बाद दूसरी कैंडल फॉर्मेशन का टाइम देखेंगे, उस कैंडल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, और उसी में हम लोग अपनी एक पोजीशन को कैरी करेंगे। एक और कैंडल फॉर्मेशन देख सकते हैं 1760s के लेवल को ब्रेक करते हुए 1761 तक के लेवल्स, और अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग को अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से 1761 के लेवल बन रहे हैं, हम लोग अपनी इस पोजीशन को बाय साइड कैरी करेंगे। देख सकते हैं हम लोगों ने अपने 2 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हुए 1761.67 के लेवल्स पे। ओके, वापस से थोड़ी सी करेक्शन के माहौल 1760.27। हम लोगों ने अपनी पोजीशन को बाय साइड कैरी किया हुआ है। वापस से करेक्शन 1759 तक के लेवल्स। देख सकते हैं 1 मिनट कैंडल का मूव देखेंगे तो 1 मिनट कैंडल थोड़ी सी करेक्शन के बाद वापस से अपसाइड रिबाउंड करती हुई 1760.70 के लेवल्स पे। कल जैसे कि लगातार गिरावट देखने को मिली थी, आज हम लोग उम्मीद करें कि लगातार तेजी आती हुई दिखे।
एटलीस्ट शाम तक के लेवल्स पे 1775 तक के टारगेट्स देखने को मिले और उसके बाद 7:30 बजे जो न्यूज़ आने वाली है उसका मूव देखेंगे। 5 मिनट कैंडल का मूव देखें तो 5 मिनट कैंडल लगातार तेजी के बाद वापस से थोड़े करेक्शन 1760.5152 के लेवल्स पे। वापस से अपसाइड रिबाउंड 1760.8381। प्राइजेस पूरी तरह से 1760s के लेवल को बनाए हुए हम लोग आ जाते हैं अपने फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर पे। तो आज हमारी फ्राइडे मार्केट और देख सकते हैं कि जो हम लोग को आज डेटा देखने को मिला था, जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, 1:30 बजे का डेटा है टीआईसी लॉन्ग टर्म परचेसेस। और इसमें सोर्स देख सकते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। मेजरमेंट डिफरेंट इन द value between foreign long-term securities purchases by US citizens and long-term securities purchased by US citizens and US long-term securities purchased by foreigners during the reported period. तो इसमें देख सकते हैं एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। एक्सपेक्टेशन जो हम लोग की थी 60.58 की थी और जो आते हुए दिखा 2.0 मिलियन, यानी कि एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग, जिसकी वजह से हमारा गोल्ड जो है एक बार अपसाइड रिबाउंड करते हुए दिखा है। आज शाम के डेटा देख ले तो शाम में जो डेटा आने वाला है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 7:30 बजे डेटा प्रीलिम क्यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट। तो इसमें जो हम लोग सोर्स देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन। मेजरमेंट लेवल ऑफ अ कंपोजिट इंडेक्स बेस्ड ऑन सर्वेड कंज्यूमर्स। प्रीवियस 70.3, एक्सपेक्टेशन 71.9। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, यानी कि अगर एक्चुअल हम लोग का 71.9 से ऊपर आ जाता है तो करेंसी के लिए गुड और गोल्ड हमें डाउन होता हुआ दिखेगा और वाइस वर्सा। और इसके साथ ही 7:30 बजे एक और डेटा देखने को मिलने वाला है जो कि प्रीलिम यूएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट आता है तो हम लोग को करेंसी के लिए स्ट्रांग होगा प्रीवियस 4.6। और इस पर देखेंगे कि क्या डेटा देखने को मिलते हैं। तो आज हमारा सारा डेटा 7:30 बजे के लगभग एक बार MT4 टर्मिनल पे आ जाता है। तो MT4 टर्मिनल 1760.6265 के लेवल्स पे।
देख सकते हैं 1760.72 के लेवल्स पे प्राइजेस वहीं पे स्टे करते हुए दिख रहे हैं। ब्रेक अभी नहीं किए हैं, अगर ब्रेक करते हुए दिखते तो हम लोग उम्मीद कर सकते थे कि एक बार अपसाइड मूवमेंट 1761 तक के लेवल्स दिखाते हुए मिल रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं एक बार अपसाइड रिबाउंड की। हमने अपनी पोजीशन को बाय किया हुआ है 1761.67 के लेवल्स पे। देख सकते हैं प्राइजेस एक बार 1760 के लेवल को ब्रेक करते हैं 1761.20 के लेवल्स पे, और हम लोग की बाइंग 1761.67 के लेवल्स पे है। पूरी उम्मीद करें आप साइड रिबाउंड की, और अगर ये सब लेवल ब्रेक करता है तो 1765 1770 हमारे टारगेट्स होंगे। प्राइजेस में पूरी स्टेबिलिटी 1761 के लेवल्स पे। ओके, सो प्राइसेस एक बार रिबाउंड करते हुए दिख रहे हैं। जब तक कि हम लोग की पोजीशन प्रॉफिट्स में आती है, हम लोग आ जाते हैं न्यूज़ सेक्शन पे। Okay, so gold rebound remains elusive below 1786 US data Fed in focus. Gold picks up bids to fresh. So gold picks up bids to refresh intraday high around 1758.
up 0.20% on a day, licking its ground during early Friday. The precious metal dropped the most since August 6 on the previous day on accelerated chatters over the Fed's tapering during the next week. देख सकते हैं 1761.78 के लेवल्स पे. So the sharp decline sent technical indicators to the downside. So the RSI is oversold extreme levels but is still pointing south with no signs of favoring a consolidation ahead of a rebound. The slide was capped by the 1745.50 support area, that is strong barrier. A break below should open the doors to more losses, probably targeting the 1725 area. A bullish correction could find resistance at 1775. A band between 1775 to 1780 is now a critical obstacle. If XEU-USD recovers level above, it could elevate the bearish pressure. To negate the negative bias, gold needs a daily close above 1833, while in short term, the downside pressure remains intact even after the $50 sell-off. So support level 1745, 1723, 1714.95, whereas resistance level की बात करें तो 1764.50, 1779.45 और 1795. फंडामेंटल ओवरव्यूज की बात करेंगे उसके पहले एक बार MT4 टर्मिनल पे तो प्राइजेस लगातार तेजी के साथ एक दूसरी कैंडल फॉर्म होती हुई 1761.6263 के लेवल्स. देख सकते हैं वापस से थोड़ी सी करेक्शन 1 मिनट कैंडल का मूव देखेंगे तो 1 मिनट कैंडल वापस से थोड़ी सी करेक्शन के साथ 1761.31 के लेवल्स पे. देख सकते हैं वापस से एक रिबाउंड 1761.44. उम्मीद यही है कि एक बार 1764 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे रेडार पे और हम लोग की वही से पोजीशन हम लोग क्लियर करते हुए दिखेंगे.
आ जाते एक बार वापस से डिस्कशन सेशन पे. सो फंडामेंटल ओवरव्यूज की बात करें. गोल्ड प्राइसेस stumbled on Thursday affected by the rising US yields, a stronger dollar and technical factors. The ounce troy dropped to 1745, hitting the lowest level in a month. Economic data from the US triggered a rally of dollar and also decline in treasuries. The US dollar index rose toward 93, reaching the highest level since August 27. The US 10 years yield jumped to 1.35%, matching last week's high and then pulled back. The 1.35% barrier has become critical, and a break higher could trigger more of the current moves in the favor of the dollar and against gold. Following Wednesday's upbeat US economic data on Thursday, the retail sales report showed a 0.7% increase in August, above expectations. And the Philly Fed soared to 30.7 against market consensus of a modest decline to 19. Those figures took more relevance ahead of FOMC meeting next week. Gold prices could remain under pressure until Fed's announcement as market participants continue to digest the latest positive economic numbers. सो गोल्ड के एक्सपेक्टेशंस देखेंगे तो अभी भी सेम एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है 18-13, जबकि प्राइसेस बुलिश नहीं है बिल्कुल भी. सो एक बार ये हम लोग देखेंगे. Okay, it's not worthy because we have discussed this earlier. So देख सकते हैं गोल्ड एक बार वापस से तेजी के साथ 1761.7276 के लेवल्स पे लगातार तेजी के साथ हमारी पोजीशंस प्रॉफिट में है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अच्छे प्रॉफिट जनरेशन का. तब तक आ जाते हैं गोल्ड न्यूज reuters.com पे और देख लेते हैं प्रीशियस गोल्ड इंचेस हायर सेट फॉर द वीकली लॉसेस एज डॉलर हेल्ड फर्म. Break below 1750 could see gold fall to 1715. Dollar holds close to the near 3-week peak. Gold prices recovered on Friday after sliding to an over 1 month low in the previous session. Though a firmer US dollar set the metal on a course for weekly decline as investors awaited next week's key US Federal Reserve policy meeting. Spot gold edged up 0.3% to $1758.10 per ounce by 0329 GMT, while US gold futures gained 0.2% to $1759.50. The precious metal has declined 1.6% this week, while support at 1750 has so far held, with some speculative short covering lifting prices slightly. The bounce looks anemic, and gold faces another test of 1750 as the dollar reforms. The dollar held close to a near 3-week peak on Friday, increasing gold cost. For buyers holding other currencies, if $1750 breaks, gold could target 1715 area and potentially long-term support around 1675. Bullion slipped as much as 2.7% on Thursday as the dollar index jumped after an unexpected increase in US. Retail sales last month raised expectations of the Federal Reserve potentially reducing its stimulus sooner.
The Federal Open Market Committee's two-day policy meeting is due to be held on September 21-22. Reduced central bank stimulus tend to lift bond yields, which raises the opportunity cost of holding non-interest bearing gold. It also helps boost the dollar, further weighing on bullion. Fifth Solutions said in a note it had a neutral outlook on gold for upcoming months, with the precious metal easing in 2022. The Fed's normalization of monetary policy, a strong global economic growth outlook, and the temporary strengthening of US dollar should put a lid on gold prices. Silver fell 0.1% to $22.91 per ounce after hitting its lowest in more than a month on Thursday. Platinum rose 0.9% to $941.31, while palladium dipped 1.8% to $1997.08. Buy Nakul Ayer in Bangalore. देख लेते हैं MT4 टर्मिनल तो हमारी पोजीशन प्रॉफिट्स में प्राइजेस 1762.35 के लेवल्स पे देख सकते हैं प्राइजेस राइज के साथ 1762.38 के लेवल्स पे वेट करेंगे अच्छे प्रॉफिट जनरेशन का और उसके बाद अपनी पोजीशन को क्लियर करते हुए दिखेंगे पूरी उम्मीद करें दूसरी कैंडल हमारी अपसाइड मूव करती हुई दिखे ताकि हमारी पोजीशन अच्छे खासे प्रॉफिट्स में जनरेट होती हुई मिले प्राइजेस पूरी तरीके से अपसाइड रिबाउंड करते हुए हमारी पोजीशन $174 के प्रॉफिट पे
और हम लोग अपनी इस पोजीशन को यहीं से क्लियर कर लेंगे। तो हम लोगों ने अपनी एक पोजीशन प्रॉफिट्स में क्लियर की हुई है। देखेंगे दूसरी कैंडल का फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में होता है। प्राइजेस लगातार तेजी के साथ देख सकते हैं जिस तरीके से फॉर्मेशन दिखा रहे हैं 64 65 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। एक और कैंडल फॉर्मेशन और वो भी पूरी तरीके से तेजी के साथ। अब वापस से करेक्शन आती है 1762 के लेवल्स पे। हो सकता है 1762 एक अच्छा रेजिस्टेंस बन जाए। ओके सो वापस से हम लोग अपने डिस्कशन सेशन पे आते हैं और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें। ऑलरेडी वी हैव क्लियर्ड आवर पोजीशन विद गुड प्रॉफिट्स एंड नाउ वी आर हियर विद सम डिस्कशन पॉइंट्स। सो देख सकते हैं ऑन द रेस टू द बॉटम माइनर्स बीट गोल्ड। So points to be covered today: medium term outlook for gold, junior mining stocks, the GDX ETFs. Gold was likely to reverse in September. XEU USD gold spot US dollar.
एंड XAU USD चार्ट। सो देख सकते हैं मीडियम चार्ट आउटलुक फॉर गोल्ड। द मीडियम चार्ट आउटलुक फॉर गोल्ड प्रीशियस मेटल is the bearish one, and as gold moves lower the miners will move lower faster. Small prices jumps don't count. Let's see this trade. We are not day traders and getting excited about that. Occasional bounce is much auto report. Nothing. So gold moved higher, but not the gold stocks. Remember why I told you yesterday that the strength of the gold stocks were likely to more or less random and not a true sign of strength. Yesterday's lag thereof confirmed it. तो हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से गोल्ड एक बार अपसाइड रिबाउंड करते हुए दिख रहा था, बट हम लोग गोल्ड स्टॉक्स की बात करें तो गोल्ड स्टॉक्स रिबाउंड करते हुए नहीं दिखे, जो कि हर बार एक वीकनेस का सिग्नल होता है, और गोल्ड जिसकी वजह से कल पूरी तरह से वीक होते हुए दिखा था. Gold moved higher, but gold stocks almost didn't implication. So that's why that was just a tiny inconsequential counter trend upswing within a bigger decline. जूनियर माइनिंग स्टॉक की बात करते हैं तो जूनियर माइनिंग स्टॉक पूरी तरीके से करेक्शन के साथ देखने को मिल रहा था. इनवैलिडेशन ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न और फेक इवेंट बेस्ड रैली, वॉल्यूम पॉइंट टू बी लेटर. तो देख सकते हैं कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिखा, लेकिन स्टिल हम लोग को अपसाइड मूवमेंट की जगह डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिले. द डाउन साइड टारगेट बेस्ड ऑन द हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन द 2020 rising wedge pattern in about August 21. So the GDX ETF was up by a mere $0.16, and it closed the day very close to where it had closed on August 23, just a day after it rallied from its recent lows. In other words, the current GDX ETF price is practically just a single day rally above the yearly lows. At the same time, gold is trading over $130 above its yearly lows. Are senior gold stocks really showing strength? Absolutely not. सीनियर गोल्ड स्टॉक की अगर हम लोग बात करते हैं तो देख सकते हैं सीनियर गोल्ड स्टॉक्स भी हमारे पूरी तरह से डाउन साइड रैली के साथ. जूनियर माइनर्स आर स्टिल क्लोज टू देयर 2021 lows, while gold is now closer to 2021 higher than it has to be its 2021 lows. So concern of junior miners, as far as junior miners are concerned, the situation is similar but even more bearish. In GDXJ, we have another sell signal coming from volume. It spiked, and the last time we saw the volume hit this high was in mid-May. And what happened in mid-May? It was not the exact top, but it was very close to it. And shortly before a $15 plus decline started. A short position in the junior miners. So it was a perfect time to enter a short position in the junior miners, or one could use this indication as reassurance that this position is just justifies from the risk to reward point of view. Of course, there are many more factors that point to the direction, not just the volume spike in GDXJ ETFs. Overall, juniors are verified their previous breakdown to near yearly lows, and they are successful in their verification. This opens the door to huge declines wide open. टू ट्रायंगल वर्टेक्स बेस्ड ऑन रिवर्सल देख सकते हैं पूरी तरीके से मार्केट एक बार रिवर्स करती हुई दिखी है. गोल्ड मूव्ड हायर, so just like I wrote earlier today, gold moved higher yesterday. It's down in today's pre-market trading session though, but it didn't break an important resistance level, so this move was rather inconsistent. This outlook for gold and gold stocks remain bearish. वापस 74 टर्मिनल पे आ जाता है तो प्राइसेस एक बार पूरी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ ही देखने को मिल रहा है.
देख सकते हैं 1762.79 के लेवल्स पे। लगातार तेजी 1762.94 तक के लेवल्स। ओके, सो देख सकते हैं हम लोग और कोई पोजीशन कैरी करना नहीं चाह रहे यहाँ पे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गोल्ड मूव हायर। सो जस्ट लाइक आई रोट अर्लियर टुडे, gold moved higher yesterday, but it didn't break any important resistance level, so this move was rather inconsequential. The outlook for gold and gold stocks remain bearish. Gold was likely to reverse in September, but by the way, do you recall when I wrote that gold was likely to reverse in the second half of September or in the middle of? But that we will know more when we get closer to this date. Well, it's the middle of the month today, and it's obvious that we didn't see a major decline in the recent days, but just a relatively small one. Gold was likely to reverse in September. Consequently, it seemed that reversal that I mentioned previously will not be an important bottom, but an important top. This makes sense in the light of upcoming FOMC, which is likely to trigger some short-term volatility. Will the PMs and miners rally until the Fed speaks? It is unclear and not that likely. Midterm is clear for gold. They could decline beforehand or they could do nothing. The very near term is unclear, but that doesn't matter that much as the medium term is very clear. The gold, silver, and mining stocks are going down. One of the reasons is the more than confined breakout above the neck level in the USD index inverse head and shoulder pattern. The USDX has been moving back. It took about a year for its bullish pattern to form, so it's likely that its consequences will also be medium term nature. So far, the USDX has been moving back and forth, but when it finally moves, it's likely to rally above 797 as the targets based on this formation are based on the size of its head. As the USD index rallies, gold is likely to move lower.
So and as gold moves lower, gold stocks are likely to move for lower faster, and they have been underperforming for 3 months. And as senior gold miners move lower faster, junior miners are likely to move lower even faster. सो गोल्ड देख सकते हैं जिस टाइम पे ये लिखा गया था 1786.78 के लेवल्स पे मूव करते हुए देखने को मिल रहा था। वापस से एक बार आ जाते हैं अपने MT4 टर्मिनल पे, तो प्राइजेस एक बार तेजी के साथ 1763 के लेवल्स पे। एक दूसरी कैंडल फॉर्मेशन, वो भी शॉर्ट ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन के साथ। देख सकते हैं लगातार तेजी बनाते हुए मार्केट, एक बार भी करेक्शन दिखाती हुई नहीं मिल रही है। सुबह से लगातार रैली हम लोग को तेजी के साथ, कल जिस तरीके से डाउनफॉल देखने को मिले थे आज उसी तरीके से रिकवरी के साथ मार्केट। देख सकते हैं 1763 के लेवल से वापस से थोड़ी सी करेक्शन आती हुई।
So हम लोग आ जाते हैं एक बार goldnewskitco.com पे और देखते हैं उस पर क्या देखने को मिल रहा है हमें. So goldnewskitco.com और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीज़ें. हम लोग देखेंगे ये क्लिप. Kitco News special coverage of the Denver Gold Forum is brought to you by New Pacific Metals. We're here with Frank Holmes, CEO of U.S. Global Investors and Executive Chairman of Hive. Welcome to the show. It's good to be here. Good to finally meet you in person, Frank. I'm excited. You and I have spoken many, many times over the last year. This is the first time we've met? Well, no, you and I have met in person, but first time we're doing a live interview together. Exciting, exciting. You're wearing a Bitcoin shirt at a gold conference. Isn't that like sacrilegious? People here give you dirty looks or what? No, but you've long advocated for both. So we'll talk about both asset classes. What is the theme of your presentation at the Denver Gold Forum? Well, it's for a lot of these CEOs, particularly the millennial investor. The influencers, such as Kitco, is an incredible educational platform doing interviews with all the CEOs from the whole spectrum, from junior to senior mining companies. Yeah. They're not going, the new investors are not going to Merrill Lynch's wirehouse to get research on these gold stocks. Right. They're not going to RBC. With all respect, they're just not doing it. Right. But all these CEOs want to get that research, but really they're using YouTube and they're using other platforms like Reddit to try to see if they can get insight and granularity on the story that you're trying to tell. And it's really respecting that digital world we're living in. And that's what drove my JETS ETF. I mean, JETS ETF went from 40,000 shares a day last year to 8 million. Yeah. It goes from 40 million to 4 billion. Right. What triggered that, that's now big institutional, is the retail. And what were they seeing? And they did their own research on the internet, sort of decentralized information, right, that after every crisis, the airlines fall 70%, then they go up 120. Right. So they did their own research, and guess what? Buffett was wrong, and they were right. So we're seeing that the same thing in many technology stocks. We saw it a bit in silver, but I think these CEOs have to recognize that their story is a vision of what they intend to do. It's not guaranteed or promissory, but they have to paint a picture. Yes, there's risks of volatility, all these parts, but the story is missed, so you're not attracting the millennial. Yeah. Well, your JETS ETF, the AUM grew in part due to the fact that the performance was good, right? So you do need that underlying growth in the... No, what happened? No, David, that's the phenomenon. In March, right, in April, and in May of last year, it went from 40,000 shares a day to 400,000. Tenfold increase in volume, and the ETF stayed flat. Who were the new buyers of the fund? This was all the Robinhood type of investors who are going through Schwab, in particular TD Waterhouse. You could see TD Waterhouse dropped all their commissions to attract new buyers. Yeah. So you saw in particular the Robinhooders, I think something 35,000 of them bought until June, and that ETF went from $12 average ticket price to $28. So if I were a mining CEO of, I don't know, a mid-tier or senior, doesn't matter which, and you're having a meeting with me, and I say, Frank, how do I be like you? How do I get the millennial crowd to invest in my stock? What advice do you have for me? Retell your story and reposition it on all these social platforms such as Kitco. YouTube is really critical. The Reddits of the world. The forums. I was talking to a CEO this morning and asked him, are you using Telegram or Signal? What is it? I mean, what is it?
I mean, all the tech people create Telegram. They send, actually my Frank Talk is on Telegram. A coin graph, it's also on Telegram. So it's another way of telling your story. They're oblivious to that. And that person that's going to be buying stocks and speculating, and young people should be speculating, versus someone my age that be taking big risks, but it's a younger investor that speculate. Well, they're all using different platforms to get their research. Well, do you think the price, the underlying price of the metal, the gold, silver, needs to move first before the retail crowd starts to pay attention? Do you think it's a chicken and egg problem? Like, first you got to get the retail crowd to pay attention to drive up the price, but they're not paying attention because the price is just flat. But why are they buying Bitcoin? Because it's decentralized. What's the other reason? It's private property. What's the other reason? Because it's private property and it's portable. But it's very important. So is gold. Right? So where are they buying gold? What's going on here? How come gold investors, in particular these companies, they're not hodling their gold? MicroStrategy comes along and quadruples the stock price, actually sixfold, Michael Saylor, by saying he cannot grow his top line business faster than the money supply is being printed. So he's going to turn around and use Bitcoin as a proxy. Well, I'm a gold producer and I've got free cash flow, 100 million a month. Well, why am I not keeping $10 million of my gold? That's what's going to resonate with you, that investor, that you're believing with conviction that money printing that's out there is going to get a bid, and you're going to see gold take off and silver take off because you're actually hodling it. But you don't see that happening. The last time we had a gold hodler was Rob McEwen in like 98. And guess what? He got attacked by all the big banks, gold analysts, by saying, but his price went to the highest price to book value. He made a lot of money with Rob McEwen. So he's quite correct. If you have big free cash flow and you really believe in your product, which is like gold, or you've been Bitcoin, then you should be hodling it. Well, do you think a lot of capital is flowing away from gold into Bitcoin, into cryptocurrencies? I mean, you're at a gold forum, and you're also the executive chairman of a company that mines cryptocurrencies. What's your pitch to the gold crowd? Well, I was at the conference in Miami. They had 13,000 people spend $1,500 to get in the door. And then they were scalping tickets to get in. All right? That never happens at a gold conference. And their first keynote speaker is Nick Szabo, and he goes through the history of why you want to be long Bitcoin, but also gold. He wrote in 1997, BitGold smart contract. He's a coder, he's a historian, and he's a lawyer. And so you have, how come all these millennials buy into all this money printing, but they're saying their proxy, their bet is on a Bitcoin because it's capped at 21 million coins. It's not gold. Well, you have to reposition your story and stop selling all your gold if you have free cash flow. You know, I want to talk about the miners because a lot of people here invest in the miners. You were telling me offline that they were growing for all the wrong reasons. They were making a bunch of deals since the early 2010s. You were talking about that since 2007, about all the non-accretive deals they were making. And look what happened to the share price now. The gold price is flat, but their share price continues to fall. Tell us about the deals the industry is making. Well, I spoke at this conference in 2006-07, warning about the M&A work, and the quants are taking over. And the quants were able to see that two companies pull together, and yes, their revenue grows and their cash flow grows, but on a per share basis, their revenue declined 46% on average for the GDXJ, and the GDX is something like 35%. So you're seeing that there was massive dilution. So then gold takes off from that point, but those gold stocks didn't. Then we have another rally in 2011. The gold stocks do this rally, and once again, you get these crazy mergers that are non-accretive. I think today they're more accretive, and I think they're much smarter today. Absolutely, there's much smarter mergers and M&A work today, but they don't tell that story. What's the difference between today and 2007? The dilution. If you take a look at the dilution of the number of shares being issued by the ETF of the GDX and GDXJ, that's why I created Go AU ETF, because it's really focused on who has the best values per share each quarter, or the royalty companies who have the best value metrics per share. And so what's happening in our world when it comes to gold and these stocks, it's much more quant driven in the analysis
on doing comparative work, and is much more robust. So how do you tell that story to a millennial that you are more attractive? सो देख And सकते हैं and if by the way, the 12 बजे का टाइम और हम लोग आ जाते हैं अपने MT4 टर्मिनल पे, तो 1763 के लेवल से वापस से करेक्शन दिखाते हुए मार्केट 1762.36 के लेवल्स पे मूव करती हुई दिख रही है। नेक्स्ट कैंडल के मोमेंट का वेट करेंगे। ओके, एक दूसरी कैंडल फॉर्मेशन 1762.38 के लेवल्स पे। तो हम लोग एक बार MT4 टर्मिनल से आ जाते हैं अपने फॉरेक्स फैक्ट्री डेटा की ओर, और हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट वीक हम लोग को कैसा होने वाला है और कितनी ही न्यूज़ आने वाली है, उसको एक बार एनालाइज करते हैं। सो हम लोग देखेंगे 20 सितंबर से इट्स 24 सितंबर। अप्लाई सेटिंग। सो देख सकते हैं 20 सितंबर हम लोग को शाम को 7:30 बजे एक न्यूज़ देखने को मिलने वाली, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, NAHP हाउसिंग मार्केट इंडेक्स। ट्यूसडे की बात कर ले तो इम्पोर्टेंट डेटा शाम को 6 बजे, बिल्डिंग परमिट्स, करेंट अकाउंट, हाउसिंग स्टार्ट। और वेडनेसडे की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो कि शाम को 7:30 बजे, एग्जिस्टिंग होम सेल्स, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री 60 बजे, और इसके साथ FOMC इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, FOMC स्टेटमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। और थर्सडे की मार्केट की बात कर ले तो थर्सडे हम लोग को जो डेटा देखने को मिलने वाले हैं वो है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, फ्लैश सर्विसेज PMI, CB लीडिंग इंडेक्स 1 to 1, नेचुरल गैस स्टोरेज। 24 को शाम को 7:30 बजे फेड चेयरमैन पवेल स्पीक, न्यू होम सेल्स। तो बहुत ज़्यादा डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। सो हम लोग वापस से MT4 टर्मिनल पे आ जाते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली और प्राइजेस 1764 के लेवल्स पे मूव करते हुए।
1765 हमारा नेक्स्ट टारगेट है। सो अगर आप लोग की साइड से कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और एल्स टाइप 100 टू एंड में दिस सेशन राइट है। आज गोल्ड का मूव हमें पूरा तरीके से अपसाइड देखने को मिल रहा है। डिपेंड करेगा शाम को कैसा मूवमेंट देता है। 1775 तक के लेवल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अगर उसके बाद तेजी देता है और आज की न्यूज़ अच्छी आती है तो हम लोग देख सकते हैं 1780 तक के टारगेट्स को भी टच कर सकता है गोल्ड। जिस तरीके मूव है अगर न्यूज़ नेगेटिव आती है तो हम लोग को 1680 तक के लेवल्स पे एक्सपेक्टेड है मार्केट में अभी भी, क्योंकि हम लोग ये नहीं कह सकते कि लगातार एक बुल ग्रीन कैंडल के बाद हम लोग को अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेंगे, नॉट एट ऑल। क्योंकि अभी मंडे मार्केट की टेपरिंग की न्यूज़ बाकी है और पॉसिबल है एक बार डिप्स देखते हुए मिले, और अगर डिप्स देखते हुए मिलेगी तो हम लोग को बहुत अच्छी बाइंग साइड पोजीशन यहाँ से देखने को मिलेगी। पोजीशन क्लियरिंग की बात करें तो हम लोग बात करें टुडेज डेटा तो हम लोग यहाँ से टुडे एंड आज की ट्रेड देखेंगे तो आज हम लोगों ने जो पोजीशन क्लियर की हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट बाय की हुई थी 1761.67 पे और उसको सेल किया 1762.46 पे, दैट इज़ $158 के प्रॉफिट जनरेट होते हुए। बाकी पोजीशन हम लोग बाद में क्लियर करेंगे, देखेंगे कि कैसी मार्केट का मूव है और कैसे हम लोग को ट्रेड्स लेने हैं। सो आज के लिए हमारी साइड से इतना ही। कोई भी क्वेरी हो तो लाइव चैट सेशन में आप लोग मेंशन कर सकते हैं रिलेटिंग टू एनी टूल्स, एनी टेक्निक्स, एनी फंडामेंटल न्यूज़ और टेक्निकल ओवरव्यूज। You can just mention in the chat box or else type 100 to end this session right here.
ओके, सो हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आप लोग की साइड से सब कुछ क्लियर होगा, और बाकी की चीज़ें हम लोग शाम के सेशन में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड का मूव कैसा रहा शाम तक, और शाम को 7:30 बजे वाली न्यूज़ का उस पर क्या इम्पैक्ट रहा। So thank you so much for joining and concentrating, and I am leaving this meeting and ending this session right here. Keep trading and keep doing well. Thank you so much.